2 months long journey to find out the best eISL club in the country ends tonight. Welcome, ladies and gentlemen, for one last time. You are watching the eISL Season 2 Playoffs Day number 2, brought to you by Notpin Gaming. My name is Fixes. I'm joined along with TTR, and it's been a long journey. It's been grueling, and it has been exciting. We've had some moments, TT, where we were literally jumping out of seats. There were also moments where we almost were on the verge of tears. But tonight, we find out the ultimate champion who will lift the trophy and take home that 4.5 lakh rupees along with that slot for the FGS. But before we have the day started, TT, tell me about your emotions. इतने दिन से लाइक जो हम लोग जुड़ रहे थे और इतने सारे प्लेयर्स को देख रहे थे और कहने के लीग स्टेज खत्म हुआ एंड धीरे धीरे करके हम प्लेऑफ्स के लिए आए। कल के दिन पे बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक कुछ हम लोगों को गेम्स देखने के लिए मिला। इसके बाद टॉप 4 क्लब हम लोगों को मिल गया और अभी आज हम लोगों को लाइक फाइनल्स तो है, बट पहले वो आखिरी 2 क्लब्स कौन होंगे जो फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगे, वो देखना बाकी है। और उसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट, क्योंकि लेग 1 के अंदर जो कैलकुलेशन इधर बन चुका है, उस कैलकुलेशन की वजह से कोई क्लब आज बहुत ज़्यादा खुश है, कोई क्लब इधर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो उसके बीच से किस तरीके का आउटकम एंड परफॉर्मेंस निकल के आएगा, वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड विद दैट आई थिंक मैं ऑडियंस को तो कहना चाहूँगा कि आप लोग रेडी हो जाइए। आपके इतने लाइक पूरे सीज़न के बेस्ट फीफा आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। Yeah, there is no second thoughts in that. But before we have the day started, of course, let's take a quick look at the format for one last time for all you folks. And it is, of course, the league stages. They are done and dusted. We are now in the playoffs, and we had 6 clubs up until yesterday. Now we are just left with 4. And from there onwards, we are going to receive our 2 grand finalists, and whoever wins the grand finals, they are going to get that slot for the FGS locked in. The golden ticket is what we talk about, along with the moolah that all these players are also fighting for. So, of course, as we're talking about the lion's share of 33 lakh rupees, the winner takes a majority of it, and that is 4.5 lakh rupees. The second position team gets 2 lakhs, and the third and fourth get 75,000 respectively each. So, TT, we've discussed what's on the line, how high the stakes are. Now, we started this journey with 11 clubs, and now we are just down to our final 4. FC Goa, we've got Kerala Blasters FC, we've got Bengaluru FC, and Northeast United FC. Yesterday, we did have leg ones of both the semi-finals. In the first matchup, we did see Bengaluru FC getting the better out of FC Goa. It was a 2-1 scoreline. However, the first game was a brutal thrashing for One Church because CJ, he started to feel himself. 5-0 was the scoreline. And then when we thought that FC Goa might recover in the co-op, that did not happen as well. CJ, Sharknik, merely by narrow margins, got the score to 2-1, and they won that one. However, Adi Zima managed to salvage a win there. Now, as things are, TT, so we have this format around the race to 4 games in spread across 2 legs, right? So, as situation stands, if Bengaluru FC win 2 matches right now, then there is no need to play that third game, right? They directly secure their slot into the grand finals. But the matchups, TT, that is what I'm most excited about and really anxious, because is CJ going to face V Sharma again? That's the big question. जी हाँ, मुझे लगता है अगर चेंजेस आएगा तो शायद एफसी गोवा की तरफ से आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कल के दिन पे जिस तरीके के परफॉर्मेंस थे बाद आई थिंक लाइक वी शर्मा कितना ज़्यादा रिकवर कर पाए होंगे वो तो हमको नहीं पता। बट अगर आधी सीमा जाते हैं, क्योंकि आधी सीमा का फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है, कल के दिन पे वो मैच भी जीते थे तो कॉन्फिडेंस भी कहीं न कहीं रहेगा। और आज उनको 2 गेम जीतने हैं, 3 में से 2 गेम बाय एनी हाउ जीतना होगा। अगर इधर एक ड्रॉ हो जाता है और एक जीत जाते हैं बेंगलुरु, देन फिर से बेंगलुरु के पास पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो जाता हुआ दिख सकता है। तो कहीं न कहीं बेंगलुरु के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज रहने वाला है और उसी के साथ Whoa. सेमीफाइनल 1 लेग 2, बट कोई चेंजेस नहीं। वी शर्मा जाने वाले हैं सीजे के खिलाफ एंड आदि जीमा सागनी के खिलाफ। तो सीजे वर्सेस वी शर्मा के लिए रिवेंज टाइम
एंड देखते हैं किस तरीके से उभर के आते हैं वो। This is really a huge risk. It's a double-edged sword. I think FC Goa have put in all their eggs into one basket. They're gonna rely massively on their co-op games, but B Sharma out for blood again. CJ wants to redeem himself, but I'm kind of really curious to see what was the reasoning behind this. I think it's better that we directly ask Suyash to ask all the questions to the players who is waiting for us on the other side of the studio. Well, guys, I'm as excited as you are to get to know the reasoning behind the first matchup. Of course, a quick reminder 2-1 is the aggregate score right now. BFC is leading. Of course, Adizima pulled off that win in the last game yesterday to keep FC Goa alive. I have Vanshaj here with me and CJ as well. Vanshaj, the casters were saying it's revenge time for you after the result yesterday. What are your thoughts on that, first of all? So like that game is done. It was one of those days, it was a bad day for me. So we are hoping we are going for the same format. We're hoping we'll get the win. And if you could expand a little more on the reasoning behind going up against CJ once again after yesterday's result. Because getting a result against CJ is important in this format because we'll be confident going against for them in 2v2. So yeah, that's why I'm going against CJ. CJ, you had that win, of course, yesterday, but it's a fresh day. What is your mental makeup going into this match? My mental makeup will be same as yesterday, just like do my job, what I do best. So yeah, same as yesterday. Yeah. What are the conversations both of you have had with each other over the last 24 hours internally and telling yourself about how you want to go ahead and face, each other once again? So yeah, my mindset is to maintain my simple gameplay against him, not to do anything extra because he is very good defensively. So I'll just play my simple game against him. Alright, guys, thank you for your time. May the best team win, as we usually say. Thank you. And guys, you see what the guys over here are up to. Very level-headed, of course. No room is going to be given for any complacency. It's back to you guys in the studio. All right, so I think we've got a few reasonings out of the players of FC Goa, right? Like I anticipated, they are heavily relying on their co-op game. So let me explain this further. So let's just say everything goes south for them, for FC Goa in the first game against CJ, and they manage to take a defeat there. But they still have one more game, and this is where I think FC Goa have flourished the most. TT, right? They have been winning the majority of the co-op games, and they're still confident. And if they go on to win that one, and then they would expect Adizima to pull another W against Sagnik. And if that happens, well, we are going to go to the decider. Well, there will be another extra co-op game where FC Goa are going to be favorites once again. Before we have the matches started off, TT, tell me about the head-to-head that's going on between these two clubs. देखिए अभी तक के गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहने की हेड टू हेड पे दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन अभी ये हेड टू हेड आई डोंट थिंक कि उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा कोई भी प्लेयर को, क्योंकि दोनों ही प्लेयर वो कह रहे हैं लाइक जो दिन गया वो बाद गया, अभी आज के ऊपर वो फोकस करेंगे, स्पेशली वी शर्मा, क्योंकि वी शर्मा के लिए वो रिसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत था और वो रिसेट करके आए हैं। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, लाइक जो स्टेटमेंट उन्होंने दी, उससे लग रहा है कि वो एक खराब दिन था, वो एज अ बैड डे उन्होंने लिया है, लेकिन आज जो है वो ज़रूर अपने नॉर्मल गेम के ऊपर जो वो खेलते आ रहे हैं, जिससे उनको इतना ज़्यादा सफलता मिला है, इतना बेहतरीन गेम्स वो निकाले हैं, वो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे और उससे ही कोशिश करेंगे सीजे को रोकने की। बट ऑन द अदर हैंड सीजे की अगर बात करें, आई थिंक देखिए मुझे लगता है कि सीजे कुछ ना कुछ अलग सोच के आए होंगे, क्योंकि उनके पास भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं है और उनको भी पता है कि कल वो जो की वो शायद कहने के की तरफ से पता चल जाएगा या फिर लाइक वो स्टडी करके आएंगे, शायद कुछ अलग प्लान के साथ सीजे आता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। One thing for sure, while the interview was going on, I could see two contrasting set of emotions. One side we could see CJ pretty calm, pretty chill. He had no pressure at all. It's like just another day in the office. But for V Sharma, I could see, that pressure is sort of piling up, and he needs not just to prove his fans, but also to himself that after that thrashing defeat, it's very difficult for a pro athlete when you're going up against CJ in such a high stakes match, especially when you have lost 5-0 to him in the first leg. And let me remind you, just before this, Vanshaj was undefeated. A lot of players have tried. A few have pulled out draws against him, but that's it. Nobody had managed to beat him.
and a crushing defeat to a 5-0 scoreline. I am pretty sure it was very hard for Vanchaj to digest, but seems like he said, what's happened in the past, let's bury the hatchet and let's move on, because there's no time to lament over that anymore, right? Of course, CJ would try to harass Vanchaj once again, because if you remember CJ's style of play, he was barely giving Vanchaj chance to keep possession, right? And that is one thing that Vanchaj Hmm. has to deal with. I think Vanchaj has to be looking to play a little bit of those longer balls. He has to, constantly keep on passing. He has to switch sides of play, try out different variation of FIFA, just like Lokmanu did against Crusher. Even yesterday we saw against Imad, he did take that L, but that was such a valiant effort. So something out of the book is what V Sharma needs to do: catch CJ off guard. Otherwise, FC Goa, they're going to be in a whole world of trouble. देखिए, आज जो सिनेरियो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अलग है। कल से तो बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि आज बैंगलोर एफसी को जस्ट एक विन चाहिए, और उसके बाद अगर एक ड्रॉ भी निकाल देते हैं, देन उनके पास आ जाएगा ये पूरा विक्ट्री, एंड वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सो बैंगलोर एफसी के पास अच्छा खासा क्वेश्चन है, बट एफसी गोवा वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी ड्रॉ इधर से। उनको जीतना ही होगा। शुरू हो चुका है गेम, सेमीफाइनल लेग 2 और गेम नंबर 1, लेफ्ट टू राइट इधर एफसी गोवा, राइट टू लेफ्ट इधर बैंगलोर एफसी। बट आज क्या वी शर्मा वो रिवेंज ले पाएंगे जो कल उनको इतना ज्यादा परेशान किया था 5-0 के लॉस के साथ? आज उनके पास अच्छा मौका है, बट बॉल कंट्रोल अभी सीजे के पास, एंड सीजे धीरे-धीरे करके नहीं, बहुत तेजी से बिल्डअप, पहला तो हो Oh! सकता था। माय गॉड, क्या कर रहे हैं सीजे? कल जैसा ही सेम इंटेंसिटी आज भी मौजूद है उनके गेम पे। Yeah, CJ is in no mood for fun. Instantly wants to go and decimate V Sharma for good. But V Sharma, he's got a sword hanging over his head. And somehow down the line, he needs to understand, needs to live with that pressure, and needs to take that burden, and needs to get that first goal. So what initially V Sharma was attempting was try to initiate a play from that right wing, but unfortunately CJ read through that as well. And now CJ, he's got that advantage, right? Bengaluru FC have that one game lead against FC Goa. So CJ over here, he's got all his time to kind of plan his play, what he's going to try and do, and the variation coming in. And Vanchaj did also mention that CJ was really good defensively, and that too around the midfield. I felt like Vanchaj was kind of restricted. CJ was constantly fighting for the ball. You could see that constant press all the time on V Sharma, which was so hard to deal with. But this time, however, you could see those quick set of passes coming in. He's not holding the ball for long, and now he's finally decided to create some room. But feels like CJ was prepared for it. सीजे कहीं न कहीं जिस तरीके से वो आज शुरू किए थे, लाइक विद इंटरव्यू, उससे दिख रहा था कि जो कॉन्फिडेंस है उनका एकदम 7वें आसमान पे है, और क्यों ना हो 5-0 से आप जीते हो पिछला गेम। Oh, बट आज देखिए वी शर्मा, यानी कि उनको उभर के आना होगा। वैसे थोड़े बहुत मिस पासेस देखने के लिए मिल रहे हैं, अगर वो पास अपने ठिकाने पे पहुंच जाता तो शायद इधर एक बेहतरीन मूव बनता हुआ दिख सकता था। लेकिन मिडफील्ड के ऊपर आज बहुत ज्यादा बॉल हम लोगों को घूमता हुआ दिख रहा है, जो कि कल नहीं था, क्योंकि कल सीजे ही सिर्फ और सिर्फ रूल कर रहे थे पूरे गेम के ऊपर, और बैक टू बैक जब भी बॉल मिल रहा था वो डायरेक्टली अटैक के ऊपर जा रहे थे। बट आज थोड़ा सा ध्यान से खेला जा रहा है सीजे की तरफ से, बट इस बार रोनाल्डिनियो एंड विथ, ओह माय गॉड, नो! देख के लगा शायद ये गोल हो जाएगा, बट वो शॉट ऑन टारगेट नहीं रख पाए थे। oh my goodness. I mean, at this point, right? I think somewhere down the line, V Sharma must be thanking his stars. I think everything is looking aligned for him, because two golden chances were created by CJ, but none of them could be converted. And we could see one thing that V Sharma, look at that. He's not keeping the ball on one single player for even more than a second, right? Instantly just keeping the ball going through, and with Lionel Messi, Oh! tried to take that shot. But CJ, I think this is where V Sharma was talking about CJ's impeccable defense, right? Because he's reading V Sharma so well that he understands where the pass is going to go, which player he's gonna opt for, and he makes those faster player switches. And before the pass could even come in, you could see the tackle already there. So this is one of those things that V Sharma is
yet to figure out. I mean, we haven't seen V Sharma play those long balls. I mean, at this point, I would want to see V Sharma try to go for those cross plays, something that Imad really expertises in doing. But as of now, one good thing about V Sharma so far is he's trying to keep a lot of possession, constantly passing the ball, which is good, especially not giving the ball, not just dancing to CJ's tunes anymore. देखिए, मुझे लग रहा है बहुत सहमे हुए से हैं इधर वी शर्मा, लाइक जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो आज ये मेक श्योर कर रहे हैं कि सीजे जो करेंगे, उसको पहले स्टडी कर लें एंड उसके बाद पास कराएँ। वो थोड़ा 1 सेकंड के लिए बॉल होल्ड कर लिया। हाँ, लाइक वो बहुत जल्दी-जल्दी पास कर रहे हैं, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए देख रहे हैं कि सीजे के जो प्लेयर है, लाइक कौन से प्लेयर के ऊपर वो कंट्रोल रखें, उस हिसाब से वो पास खेल रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांज़िशन उतना तेज़ी से नहीं हो रहा। अगर इधर से सीजे एक गोल स्कोर कर देते हैं, Oh, देन मुझे लगता है कि कोई भी और गोल नहीं nice. आएगा वी शर्मा की तरफ से। सो वी शर्मा को मेक श्योर करना होगा कि वो पहला गोल दागे एंड कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करे। बट एज़ ऑफ नाउ बॉल कंट्रोल उनके पास, लियो मेसी को एकदम लेफ्ट विंग पे इधर खिलाया जाता हुआ। कल के दिन पे बेलिंगम का जो रोल है वो काफ़ी बेहतरीन हम लोगों को देखने के लिए मिला था। लाइक हर एक प्लेयर कहने के विद बेलिंगम बहुत ज़्यादा जो चांस है वो क्रिएट कर रहे थे। बट देखिए इस बार एक अच्छा मौका बन रहा था, बट विथ थियो हर्नांडेज बॉल छीना गया। सीजे एक बेहतरीन काउंटर पे, बट नो, थोड़ा एक्स्ट्रा रन निकाल गए थे उधर में से। अगर थोड़ा रन टाइम हो जाता तो शायद एक थ्रू बॉल भी देखने के लिए मिलता। Yeah, and at this point, you could even see that CJ's figured out what V Sharma is up to. So he needs to kind of build his play a little bit slow. And it is quite different from yesterday's matchup where CJ was pretty much in V Sharma's attacking third entirely the whole game, right? So at this point, I guess V Sharma has done a really good job to thwart that off. And defensively also, I think after those few early hiccups, he has recovered. And CJ needs to find another mode of attack. He needs to figure out some different variations over here. As V Sharma, this is a good run. He's got Hakimi cleared off. He's managed to, get the ball, but then he did not instantly press in through that right inside, an outside footer pass. And now with Rude Hullet, what is he going to do? Passing it back towards Jude Bellingham, but CJ's Rude Hullet was present over there. As a matter of fact, has stolen the ball away. And now CJ gets to initiate his play. एंड आज कहीं न कहीं कुछ इसी तरीके का अप्रोच हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लाइक दोनों ही बहुत ध्यान से खेलेंगे क्योंकि ये लास्ट लेग है इधर सेमीफाइनल का। बट इस बार विद रोनाल्डो बॉल लेके अंदर Nice. जाने की कोशिश, बट बेहतरीन डिफेंस इधर। वी शर्मा कल के दिन के बाद जिस तरीके से आज के दिन पे उनके डिफेंस के साथ कमबैक किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि कल एक तरफा चल रहा था, बट आज वी शर्मा रोक के रखे हैं इधर सीजे को। एंड आई थिंक वी शर्मा नेक्स्ट हाफ पे कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके वो अटैक के जाए, क्योंकि एक गोल जो है वो चाहिए इधर कम से कम लीड बनाने के लिए। और गोल अगर नहीं आया ड्रॉ के साथ तो आज संतुष्ट नहीं रहने वाले एफसी गोवा। You can see, right? V Sharma is all charged up. He's completely focused, barely blinking an eye there. He's understanding that one small mistake, one wrong player switch could cause him in conceding a goal. So he's being really alert. He's been playing around the midfield a lot, but you could see that he's playing with a leash on his legs, right? You can't see that free flowing V Sharma that we had seen a lot in the league stages. And folks, this is that one reason behind that. That is optimum pressure from CJ, right? He kind of understands how important this win is for him. And even if he can try to hold him for a draw and then maybe, go for something else. Because today, CJ is not playing on constant press. Because one of those setbacks you get with constant press is that your players kind of get tired pretty early, right? So then you go for those quick substitutes. And if the game goes for an extra time, then that is where you kind of miss out on that little extra burst of pace that you would need, which I think V Sharma can have. And there were a few moments where I felt, V Sharma was second guessing himself. Where with that run with Hakimi, I felt he could have gone a little bit earlier and then played that cutback pass and tried to score a goal. So far, commencement of the second half, so far we have seen CJ create two really good chances, and I do not know how that did not get converted into a goal. या मी टू, क्योंकि जिस जगह से वो शॉट उधर लिए थे, लाइक एनी अदर डे वो एक गोल होता हुआ दिख सकता था, बट हाँ लाइक वो इस बार नहीं हुआ। बट हो चुका है शुरू लास्ट हाफ।
ये एक दूसरे को आखिरी बार के लिए फेस कर रहे हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक ही क्लब जो है वो जाने वाले हैं फाइनल पे। सो क्या होगा इसके बाद? बहुत बेहतरीन पोजीशन पे इधर बॉल छीना गया। वी शर्मा के पास एक बेहतरीन मौका बनेगा क्योंकि काउंटर पे देखिए ज़्यादा इधर डिफेंस मौजूद नहीं है सीजे की तरफ से। लेफ्ट हैंड साइड से थियो थियो या मेसी? मेसी ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या वो एक बार ट्रांजिट करेंगे राइट विंग टू लेफ्ट? बट नो, राइट विंग के ऊपर ही अभी फिलहाल के लिए अपने जितने भी पासेस है वो खिलाने की कोशिश। राइट विंग से इधर कुछ कोशिश था निकालने की बट वो हुआ नहीं। बॉल छीना जाएगा, सीजे के पास बॉल, और सीजे के पास जब जब भी बॉल आ रहा है तब तब कहीं ना कहीं वी शर्मा के ऊपर प्रेशर दुगना तिगना होता जा रहा है क्योंकि वी शर्मा, उनको इधर जीत की जरूरत है। सीजे इधर ड्रॉ के साथ भी खुश रह सकते हैं, तो ये जगह पे वी शर्मा के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 55 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आखिरी कुछ मिनट्स, लाइक 30 मिनट के आसपास का गेम बाकी, बट गोल अभी किसी की तरफ से भी नहीं आया। Yeah, and in fact, you could see, right, CJ is even going for really quick passes. He kind of wants to go for that conventional style of play around the box. Just keep on passing, find that one player who's broken past the defense, and then go through. But V Sharma, he is looking stellar on his defense after those early hiccups, and he's been phenomenal so far. But right now, ever since that second half had commenced, it was CJ dominating. But now Visharma seems to take a little bit of that control, keep the possession as much as possible, try and force CJ into making one mistake, and then just applying pressure on that wound and then going to score, because this looks like it's going to be a really close game, and it's all about somebody scoring one goal and the other player kind of mentally gives up, right? Because if you haven't scored a single goal till the 63 minutes, it kind of shows. But that both the players are playing on their toes at this point, with Ashraf Hakimi, Kylian Mbappe. Oh, that pass could have been quite crucial, but sadly, it was intercepted by CJ. देखिए, अगर ये गेम कहने के लाइक ड्रॉ पे खत्म होता है, देन इसके बाद अगर एफसी गोवा 2 जीत भी जाएँगे, फिर भी हम लोगों को एक एक्स्ट्रा को ऑफ देखना We'll होगा still क्योंकि have an ड्रॉ 80. होगा। We'll still have an 80 into this game, या TT. या So we will have a decisive winner for this matchup. या फॉर श्योर, लाइक वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बट एज़ ऑफ नाउ लाइक जिस तरीके से चल रहा है इस पूरे सिनेरियो पे, लाइक कोई भी बिल्कुल भी नहीं देना चाह रहे हैं। ओह! ओह! बेहतरीन डिफेंस, एकदम लास्ट मोमेंट पे आके इधर शील्ड किया गया। देखिए इधर जिस तरीके से डिफेंस किया जा रहा है वी शर्मा की तरफ से आज, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिलता हुआ। और वी शर्मा एकदम प्रॉपर्ली शायद ऑन पॉइंट जो स्टडी करने के पे बात हम लोग कर रहे थे, वो स्टडी करके आए हैं और उनको पता है कि क्या करना है। तो आखिरी मोमेंट पे एक का जो गोल है, वो शायद दागने की कोशिश कर सकते हैं अभी। Now somebody has got to take that risk, and V Sharma, you cannot afford to lose the ball like that. At least in such scenarios, because this is where CJ's expertise comes into play. You're giving him a chance like that, he's bound to punish you. With R9, he's already pushed in, has got that cutback on Kylian Mbappe with Maldini. He's defended for so long. Again, oh my Oh. goodness, I don't know how V Sharma has survived this, but yes, he is doing it. TT. Now the final 15 minutes, and the players haven't really queued for a pause. ओह माय गॉड! क्या गेम चल रहा है दोनों ही तरफ से। जिस तरीके से लाइक उनका डिफेंस चल रहा है, उसी तरीके से कहने के मिडफील्ड के ऊपर भी बॉल को आज बहुत ज़्यादा होल्ड किया जा रहा है। देखिए अभी वी शर्मा ढूँढते हुए, एंड कोई भी न्यू प्लेयर, हाँ, आपने एकदम सही कहा, लाइक अभी तक सब्स्टिट्यूट जो है वो ज़्यादा कुछ देखने के लिए मिला नहीं है। तो फ्रेश लेग्स कब आएँगे गेम के अंदर वो देखना होगा। मेबी दोनों ही प्लेयर लाइक एक-दूसरे के गेम को देख के उनको समझ आ चुका है कि लाइक ये तो ईटी जाने वाला है। तो इसी वजह से शायद इतने देर से वेट कर रहे थे फ्रेश लेग्स के लिए। बट फाइनली फ्रेश लेग्स शायद हम लोगों को आता हुआ देखने के लिए मिले, और क्या कोई सब आके विनर स्कोर करके जा पाएँगे? कोई क्या इधर सुपर सब हो सकता है? वो कहीं न कहीं भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। Seems like there's a trick up V Sharma's sleeves. That little fist bump, that cheeky smile. He's done the job so far. He's kept CJ at bay, and CJ is starting to get restless. Look at him shaking his legs over there. You can see that he's feeling a little anxious. But one goal is all CJ needs to seal this
right here, right now. And if he does that, then well, Bengaluru FC, they're already on the driver's seat. They will just be one match away from making their way into the grand finals. V Sharma, he's played phenomenal so far. That is one of the best defensive FIFAs that we have witnessed from V Sharma. He has managed to, keep off CJ, but for how long? That's the big question. The even bigger one shall be what are the substitutions made by V Sharma? He's playing Maldini, I feel, on that right back position. So you can see he's getting that extra defensive prowess there. But right now, what is going through V Sharma's head? The final 10 minutes in the first match in the second leg, folks, and still the deadline the deadlock is yet to be broken. And again, very slow build up by V Sharma. He's known for that. But CJ has kind of figured out what he's up to. But what can he do to take the ball away from him? Today we're not seeing CJ fight for the ball a lot. He's not got that momentum anymore. And now with Theo Hernandez pushed in, passes it on to Zinho and would like to keep some possession over there with Rude Hullet. Has got that back and forth passes with Jude Bellingham. But wow, CJ has gotten in Vinicius Jr. So that means he's got that extra pace from that left wing. And just look at this guy go. नॉट ओनली पेस, लाइक उसके साथ एजिलिटी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है विद विनी। और आप शायद उसके लिए भी कहने की लेके आते हो लेफ्ट विंग से कट इन करके जो वो बॉल प्रोवाइड करते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं। एंड उसी के साथ उनके पास रोनाल्डिनियो भी मौजूद है। तो देखिए क्रिएटिविटी की तो कोई कमी नहीं है। गेम लाइक इधर भी देखना होगा लाइक क्या अटैक बन पाता है कि नहीं, क्योंकि वी शर्मा का आज डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रहा है ना। आपने एकदम सही कहा, लाइक जब 5 एट द बैक तो वो खेल रहे हैं बट थियो को ओवरलैप पे भेज रहे हैं, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा अटैकिंग पोजीशन भी मिल रहा है। और तब माल्टिनी थोड़ा-सा स्ट्रेच कर जा रहे हैं, तो 4 सीबी काइंड ऑफ लाइक माल्टिनी ज़्यादातर सीबी खेलते हैं, तो उनको उस पोजीशन पे खिलाया जा रहा है ताकि एक एक्स्ट्रा जो डिफेंस है वो उनको मिल जाए। बट आखिरी कुछ मिनट एट ए टाइम 1 मिनट का बैक पास, अभी रुडुली टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, क्या ये आखिरी मोमेंट का कोई ड्रामा अभी भी बचा हुआ ये एट ए टाइम पे? बट नो, फाइनली जाके विसल इधर बजता हुआ, दैट मींस इधर एक्स्ट्रा टाइम पे हम जाने वाले हैं। इतने देर से दोनों ही प्लेयर ने काफी ज्यादा कोशिश किया, बट एक चीज जो कि मैं एकदम स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि या कर रहे हैं, बहुत देर से होल्ड करके रखे हैं वी शर्मा, बट उनके तरफ से अटैक हम लोगों को ज्यादा कुछ खास दिखा नहीं है। जिधर लाइक सीजे की अगर बात किया जाए, वो बैक टू बैक 2 अटैक किए थे शुरुआती में, बट जब उनको लगा लाइक थोड़ा होल्ड करके खेलते हैं, उसके बाद से गेम जो है वो दोनों के लिए डिफेंसिव हो चुका है। बट अभी तक हम लोगों को विश शर्मा की तरफ से जिनके लिए वो जाने जाते हैं, उनके अटैक के लिए वो अटैक नहीं दिखाया अभी तक। I mean, at this time, this is it, right? I think V Sharma wants to take it 50-50. Maybe he wants to fight against CJ going for that penalty shootout because we are yet to see a penalty shootout. Yesterday, we did get to see it went down to the extra time, but the result did favor against CJ. I think Genocide still managed to score one, but CJ now going into extra time. Let's see what changes are going to be made. What is V Sharma up to? It's a high intense game going on right now, and it just could be anybody. Trust me at this moment, if CJ goes a little bit more attacking, he starts looking, he starts kind of fighting for the ball right now. Again, this is something that CJ was not doing throughout the game and has now started doing in the extra time. And this is where I think Vancha Sharma is sort of waiting for moments like this, where CJ charges in, makes that one mistake, and then he breaks free for a counter attack. And that is where he has to strike. He gets that one shot. He has to convert that into a golden chance and convert it into a goal. But for now, he's taking all the time in the world. With Hakimi looking for a pass, maybe goes towards Jude Bellingham. This is where I feel he's got a little window of opportunity, but no, says CJ. सीजे, ओ माय गॉड, बेहतरीन एक काउंटर विद हॉलैंड आगे बढ़ते हुए, बट माल्डिनी
के साथ इधर चेस किया जा रहा था वी शर्मा की तरफ से। देखिए जिधर मार्टिनी है उस जगह पे मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कोई भी अटैकर के लिए, और वही चीज़ हुआ, बॉल छीना गया। बट हाँ, एक बेहतरीन मौका कहने की सीजे के लिए बन रहा था। बट एज़ ऑफ नाउ वी शर्मा उनके कंट्रोल में बॉल, एंड इस बार हकीमी को लेके आया गया है। फॉर्मेशन में थोड़े बहुत चेंजेस आप देख सकते हो। इधर 4 एट द बैक अभी खेलते हुए वी शर्मा, तो उनको पता है इधर गोल करना है। गोल हो Whoa! जाएगा! बेहतरीन क्रॉस! उसी के साथ फिनिश किया वी शर्मा एफसी को विद दिस गोल। कहीं न कहीं कमबैक करते हुए इस मैच में अगर ये जीत गए एंड 2-2 हो जाएगा। Oh my god. Oh my god. V Sharma, all he needed was that one chance. And the moment he gets it, he converts into glory. Is this it? The curse for extra time still prevailing for CJ, but this is where he has to force a comeback. He had created room before, but now I think V Sharma is going to go for extreme defense, have all his players come back with Vinicius Jr. CJ is still trying to find some room and space, but look at the number over there with Kylian Mbappe takes that shot but misses again. What is happening, TT? Because we had also seen CJ take those long finesse shots with Ruud Gullit. He's not been even given chance for that. You could see the level of anxiety right now. V Sharma just needs to defend for 15 more minutes and he can turn things over. He's starting to feel the heat. The pressure is more than ever. But CJ, he knows he's got an uphill task right now. Does not have a lot of time against V Sharma, who's defending as if his life is on the line over here. There you can see he's got his music on. He needs to calm down. He needs to keep that blood flowing. He needs to stand and fight for next 15 minutes. ये 15 मिनट अगर सीजे को रोक पाते हैं, देन कहीं न कहीं वी शर्मा के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा शानदार पोजीशन तो बनेगा ही बनेगा, बट पूरा जो प्रेशर है वो शिफ्ट हो जाएगा बेंगलुरु एफसी के ऊपर। क्योंकि जब आज लाइक शुरुआती में प्री मैच इंटरव्यू पे आए थे, लाइक वी शर्मा वो सीधा-सीधा कह के गए कि हमारा जो कोऑप है, उस पे हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आज के लिए। तो कहीं न कहीं बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर इधर बनता हुआ दिखेगा बेंगलुरु एफसी के ऊपर अगर सीजे को इधर लोग लेते हैं वी शर्मा। बट लेट्स सी, हो चुका है शुरू एक्स्ट्रा टाइम का सेकेंड हाफ, 15 मिनट, और ये 15 मिनट डिसाइड करेगा क्या एग्रीगेट पे 2-2 होगा या फिर होगा 3-1। Oh, no way. V Sharma, you cannot afford to make mistakes like that. CJ has gotten in KDB. Could expect some longer shots maybe, some passes being taken, but there you go. Still holding on. That pressure from CJ is immense. And all that V Sharma needs to do right now is just constantly keep the ball in play. But Virgil van Dijk just comes out charging. You could see now CJ is starting to apply that pressure. And with Kylian Mbappe, if V Sharma manages to score one more, this is where he puts things to rest. This is where he shuts down the case. And this is where FC Goa start on the path of their comeback story. But for now, it's still far more than over. As now this is a nice chance with Capdevia. He goes charging in through a little bit of that pace. Still looking for that cutback. Denied by Virgil van Dijk. You can see V Sharma getting his extra defender, putting that R1 into use and applying so much pressure. He's not letting CJ breathe right now. But no, V Sharma, you cannot afford to lose the ball like that. As there you go. CJ scores the equalizer at such a crucial hour. And this is all out in the open, folks. It could be anybody's game. As V Sharma, he kept CJ at bay for so long, but seems like CJ is in no mood to be getting tamed over here. As now the tides, the momentum, the tables have turned, and barely 3-4 minutes remaining. Are we heading for the pens?
मे बी पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है, क्योंकि देखिए आखिरी शायद सिर्फ और सिर्फ 3-4 मिनट्स बचे हुए हैं या 5 मिनट के आसपास। बट एक्स्ट्रा टाइम पे सीजे जिस तरीके से प्रेस कर रहे थे, उन वो दिखा रहे थे नहीं भाई बहुत हो गया है, इस बार मुझे गोल स्कोर करना ही करना है। और वो मौका मिला, उन्होंने किया। लेकिन क्या ये लास्ट मोमेंट विनर किसी के भी तरफ से आएगा? रोहित शर्मा के पास भी चांस है, सीजे के पास भी चांस है। क्या होगा ये आखिरी 5 मिनट के अंदर? एक तरफ साग्निक, दूसरी तरफ आधी सीमा, दोनों अपने टीममेट को इधर कॉन्फिडेंस देते हुए कि होगा, तुमसे होगा, खेलो। आखिरी 4 मिनट, एफसी गोवा, रोहित शर्मा, बॉल प्रॉपर्ली उनके कंट्रोल पे है और आखिरी अटैक भी वही करना चाहेंगे। इंस पे जाए फिर भी चांस रहेगा, Oh my लेकिन God. विथ लूशियो बॉल छीना गया है बेंगलुरु एफसी की तरफ से। सीजे काउंटर पे, बट आई थिंक जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना के रखी है एफसी गोवा, उतना जल्दी इधर गोल कंसीड नहीं करने वाले। सो लास्ट अटैक जो हम लोगों को लग रहा था एफसी गोवा की तरफ से आएगा, वो शायद बेंगलुरु एफसी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। Yes, and this is where CJ really flourishes, has gotten in. David Ginola with Capdevia, with Haaland has to look for that cutback with Kylian Mbappe. One shot still not giving him that room, but with that heel to heel, takes a shot, but Van der Sar makes the save. The final attack of this game goes to CJ, but no, V Sharma steals it away. And there you go, the full-time whistle blows. And folks, it all boils down to a penalty shootout. My God. फर्स्ट शॉट एफसी गोवा सीधा रखते हुए जंप करे इधर बेंगलुरु एफसी। क्या इधर गोल? सेव! ओह माय गॉड, एफसी गोवा, रोहित शर्मा। Wow. ओह, The second one comes through. FC Goa have that advantage. But now CJ needs to turn it around. He does, goes for that top right corner. But all that Vanchit needs to do right now is keep the scoring game up. Keep CJ into thinking. And there you go. The bottom right. But FC Goa still having that little bit of an advantage. One more save. Then Vanchit takes the driver's seat. But no, nice Panenka coming up. He's managed to keep himself through, but CJ needs to save one. Otherwise, it doesn't matter. ओह, This is it. ओके, अभी भी चांस है। ये सेव करने होगा बाय एनी हाउ। Oh my God! ओह माय गॉड! ओह नो! क्या ये गोल कर पाएंगे? सेव कर देते हैं, देन इधर एफसी गोवा का गेम बट नहीं, कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। माय गॉड, क्या ही ड्रामा चल रहा है इधर। All right. All V Sharma needs to do is save this one. And Charan Jot needs to keep himself running, keep himself in contention. He scores. Again, it's gone for a reset. Virgil van Dijk, he scores this time, if not in the World Cup. But again, we've gone for a reset. I cannot process what's going on in my mind with Capdevia. Sharma saves it, and FC Goa have done it. How? You don't ask me. But yes, it went to overtime. It went to the pens. And from there onwards, he had to fight tooth and nail. But V Sharma redeems himself in what could be one of the best matches in eISL so far with both the seasons combined. And when it mattered, when he was questioned, he delivered. And now it comes down to the co-op. It's all level, folks. 2 all on aggregate. And this is where FC Goa, they fancy their chances, TT. माय गॉड, व्हाट अ मैच! मजा आ गया देख के फॉर श्योर। लाइक इधर जितने भी ऑडियंस है, आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग बने रहिए। आज का ये फाइनल डे
आप लोगों के ज़िंदगी का शायद एक यादगार दिन रह सकता है, लाइक आप बेस्ट फीफा देखने वाले हो, जैसे कि मैंने कहा था। और शुरुआती पहला ही गेम पेनल्टी पे चला गया। पेनल्टी पे जाके भी 5 शॉट्स पे खत्म नहीं हुआ। वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ता गया और फाइनली जाके सेव वी शर्मा की तरफ से। वी शर्मा, व्हाट अ परफॉर्मेंस! एंड एक चीज़ कहना होगा कि सीजे को इतने देर तक रोक के रखना, जो कल आपको 5 गोल मार के गए थे, वही अपने आप में बहुत-बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात है। और इस विन के बाद कॉन्फिडेंस भी इनका बढ़ता हुआ दिखेगा। बट देखिए बैंगलोर एफसी, उनके पास भी अभी इनफ चांस है। सेम विद एफसी गोवा एज़ वेल। दोनों के पास ही अभी चांस है, बट अभी जो सिचुएशन है वो है 50-50। सेम पेज पे आ चुके हैं दोनों ही क्लब्स। एंड इसके बाद ये को गेम आई थिंक डिसाइड करेगा कि जो आखिरी गेम, गेम नंबर 3 लेग 2 के होने जा रहे हैं, उस पे इसके ऊपर रहेगा सबसे ज्यादा प्रेशर। Yeah, and this is where I think Adi Zima will be, getting into the same vibes as V Sharma has been. And at this point, V Sharma literally needs a break because what he has pulled off right now, a lot of players have tried, and CJ was tested to his very best. And whenever a game goes into pen, it goes 50-50. It just goes down to that. And in that RNG situation, V Sharma managing to prevail. You need to keep that composure, and I think V Sharma was the better player in that. When it mattered, he delivered. He had been in the peril of kind of risking, jeopardizing FC Goa's chances. People were asking, why isn't Adi Zima playing that first game against CJ? Because he was, of course, the better player so far, especially after he beats Shagnik. But no, Adi Zima putting faith in Vanshaj, letting him go against CJ. And it seems like when they were playing with fire, they took it as a cover, used it into their advantage, and now everything is right out in the open, folks. Because from here onwards, if FC Goa win this co-op, then they have a massive, massive advantage getting into that third game with Adizima against Sagnik. देखिए एडवांटेज तो ऑब्वियसली इधर रहेगा, लेकिन उसके पहले इस बार कोऑप गेम के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए लाइक थ्रू आउट द सीजन, कोऑप गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट क्लब इधर हम लोग कह सकते हैं। लाइक एफसी गोवा को तो बेस्ट क्लब पे भी रख सकते हैं। अगर वो बेस्ट नहीं है तो वो शायद सेकंड पोजीशन पे रहेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड साइड भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं, तो क्या उसी जगह पे अगर देखा जाए तो इधर बेंगलुरु एफसी की तरफ से भी काफी अच्छे खासे जो आउटकम्स है वो देखने के लिए मिले थे उनके कोऑप के ऊपर। बट हाँ, अगर दोनों को साइड बाय साइड रखा जाए देन मैं कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगा टू एफसी गोवा। हालांकि कल के दिन पे एफसी गोवा हार गए थे, बट फिर भी मुझे लगता है कि एफसी गोवा का जो कोऑर्डिनेशन है, फिर प्ले मेकिंग है, वो काफी अच्छा है। और कल के दिन हारने के पीछे एक और कारण था, क्योंकि पहला गेम सीजे के साथ इधर वी शर्मा 5-0 होने के बाद वी शर्मा का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखा था। वो थोड़ा टेंशन में थे, प्रेशर में थे, वो ऑन कैम शो हो रहा था। बट आज सिनेरियो अलग होगा। आज दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो आज का जो ये कोऑप है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और सारा का सारा प्रेशर मुझे लगता है अभी बेंगलुरु एफसी के ऊपर आ चुका है। Yeah, especially, after CJ's this defeat, he must be really, really angry at this point. Kind of furious. Look at him, he's just waiting that there's a kickoff and he just unleashes himself, right? And this is something that FC Goa, the calm minds there, especially when you've got a player like Adi Zima in your team, he knows how to play around that. He knows that he's been given that chance and he is going to capitalize. But talking about what happened in the first game, we could see so many variations in style of play. I think for Vanchurch, it was all about trying to defend, and go for that one counter attack and score in that one. And he held CJ for so long. In the extra time, he did score, and at that 115th minute mark, CJ came in through with KDB, managed to get that equalizer, but still there were moments where you could say that CJ was a little unlucky also, especially in that final third. In the first half, CJ was instantly out to score. But Vanchurch, after those 2 or 3 hiccups, he managed
to kind of get himself back into the game. He was playing extremely well in terms of his defense. And then we saw around the extra time, CJ started fighting for the ball. He started, looking forward for that midfield control. He started charging in with his players. He was not letting V Sharma keep any possession, and that is how we saw him craft a goal. But when it came down to the pens, I think right with that first goal defended, V Sharma was kind of in that driver's seat. But then at the last hour, that last shot, CJ managed to save it, and then it went for another few extra pens. But eventually, V Sharma prevailed supreme. And no, this is a match, I think, for ages. A lot of you people must be enjoying yourself, as now it all boils down to this co-op game. Bengaluru FC, no matter what, they had still managed to best out FC Goa in the co-op game in the first leg. But this time, this Goa is different. It's a rejuvenated Goa, brimming with confidence and brimming with a chance to fight their way into the grand finals. ग्रैंड फाइनल्स ऑन द स्टेक ऑन द लाइन, बट अभी तक पता नहीं चला है कि कौन आगे है और कौन पीछे, क्योंकि आज के दिन शुरू होने से पहले तो बैंगलोर एफसी आगे थे, बट पिछला गेम आई थिंक मैं कहूँगा सीजे की तरफ से भी काफ़ी बेहतरीन अप्रोच देखने के लिए मिला। बट हाँ, वो पेनल्टीज में जाके सिचुएशन कोई भी तरफ जा सकता है, जिसपे वी शर्मा एकदम फोकस करके एंड लाइक उनका कहीं ना कहीं लग भी उसके साथ रहता है। देखिए, आप जब पेनल्टी शूट पे जाते हो उस टाइम पे दो चीज़ है जो आपके हाथ पे रहता है। एक है आपके गोलकीपर को आप किस तरफ जंप करा रहे हो, दूसरा आप एज्यूम कर सकते हो कि जो आपके ओपोनेंट है वो किस तरफ देख रहा है, क्योंकि जो ओपोनेंट के जो प्लेयर हैं वो जिस तरफ अपना हेड घुमाते हैं यूजुअली उस तरफ उनका जो शॉट है वो भी जाता है। लेकिन अगर जो शॉट ले रहा है वो फर्स्ट टाइम के लिए राइट से लेफ्ट पे शॉट ले ले लास्ट पे जाके, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता। कहने के लग जगह इन्वॉल्व है थोड़े बहुत। अगर बात की जाए 5 to 10%, आज सब कुछ अलाइन होता हुआ दिखा है वी शर्मा के लिए। एंड वी शर्मा आज इस जगह पे चाहेंगे कि वो इस कोऑप के अंदर एक लीड लेके जाए, क्योंकि अगर फिर से इधर से हाथ से निकल जाता है ये कोऑप, देन मुझे लगता है कि सागनिक कल के दिन के बाद कहने के आज तो स्टडी करके आएंगे, हालांकि दोनों को स्टडी करके आए हैं, बट मुझे लगता है कि सागनिक की तरफ से हम लोगों को कुछ अलग जो है वो स्ट्रैटेजी देखने के लिए मिल भी सकते हैं। बट लेट्स सी, लाइक कोऑप के ऊपर सब कुछ डिपेंड करने वाला है। You know, this is where I think I have another theory, right? If FC Goa wins this co-op, then I'm going to be calling FC Goa, right? Because for what the pressure is, Sagnik, of course, he's an amazing player, but I'm not going to take anything away from him. But when you're going up against Adizima, right? He's the professor. He has been one of those players who literally understands the other or his opposition style of play, especially when it's Sagnik against him, especially outside of eISL. He's their coach. He knows what needs to be done. He knows where Sagnik has his setbacks, right? And he's gonna punish him, add insult to his injury, and then enjoy or savor every single moment of taking him down. But you never know. Sagnik could also be the hero for Bengaluru FC. But right now, with this co-op game where we are progressing, I mean, this could be one of the most important games. I mean, coming into this game today, while in the afternoon, I read I read the playing order, and I was kind of myself surprised that V Sharma is going at CJ again, especially after he's taken that loss, that to 5-0 being the scoreline, and that was such a risky move, right? And they were so vulnerable over there. But it was so important for V Sharma to go out there, play it against in that revenge matchup, and win against CJ. No, he is high on adrenaline right now. And that being said, folks, we are off once again with FC Goa from left to right and Bengaluru FC from right to left. And this is a co-op matchup. Anything and everything could happen over here. जी हाँ, शुरू हो चुका है। बॉल कंट्रोल भी अभी एफसी गोवा के पास ही है। हम जानते हैं लाइक शुरुआती स्टेज पे अगर आप बॉल रख पाते हो देन आपका पहला अटैक तो आ जाता है यूजुअली। लाइक बहुत बार हम देखे हैं कि पहला अटैक आ जाता है, बट नो, इस बार डिफ्लेक्शन एंड साइडलाइन के बाहर
बॉल जाता हुआ फॉर्मेशन देखिए इधर चेंज किया जा रहा है। तो शुरुआत एक फॉर्मेशन के साथ एंड हम जानते हैं यूजुअली लाइक गेम के अंदर जाने के बाद जो है वो टैक्टिक जो है वो चेंज कर लेते हैं यूजुअली। तो वही चेंजेस अभी फिलहाल के लिए नज़र आता हुआ। बट ऑन द अदर हैंड बेंगलुरु एफसी की अगर बात किया जाए, तो बेंगलुरु एफसी के लाइक दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा? लाइक एक कुशनी पोज़ीशन से आपके हाथ से लीड निकल गया, आप सेम पोज़ीशन पे आ चुके हो और सागनिक की अगर बात किया जाए कल के दिन पे गेम वो हार जाना, वो भी कहीं न कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं चल रहा होगा। अगर नहीं चले तो वो बेटर है, बट अगर चल रहा है देन वो उनके लिए एक प्रेशर कहने की एक्स्ट्रा लेके आएगा इस गेम के ऊपर। उसी के साथ फाइनली लाइक पॉज़ हुआ, ओवर रिज़्यूम हो चुका है। एग्रीगेट पे आप देख सकते हो 2-2 और उसी के साथ इस बार बॉल कंट्रोल है बैंगलोर एफसी के पास। Oh yeah, and look at Bengaluru FC trying to attack from that wing, but instantly go a little bit central with Lionel Messi. Go for a heel to heel. Oh, this is ओह माय CJ's गॉड! magic, and वो he is spitting fire with Lionel Messi. An outside footer shot just beating past the defense as FC Goa. They're baffled, stunned with what happened. Literally felt like a walk in the park for CJ. The chaining of the skill moves, and he is unleashing his fury. And FC Goa are unfortunately the recipients of the same. एंड आई थिंक वी शर्मा भी इधर कह रहे थे आधी सीमा को लाइक अगर इस तरीके से ड्रिबल करके निकल जाए तो क्या कर सकते हैं राइट लिफ्ट करके। और हाँ, अभी के लिए पहला गोल तो आ चुका है और कोप के ऊपर जाके यानी कि कल के दिन पे भी लाइक बेंगलुरु एफसी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। हालाँकि आज जो शुरुआत था वो एफसी गोवा की तरफ से लाइक एज़ अ स्टेटमेंट आया था कि हाँ, हम सामने वाले का को-ऑप है और को-ऑप पे हम ज़्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं आज के दिन पे। बट हाँ, पहला गोल वो ऑलरेडी कंसीड कर चुके हैं, सो प्रेशर कहने की बढ़ चुका होगा। हालाँकि बहुत टाइम बाकी है इस गेम के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट एसी गोवा की तरफ से एक पॉज़ जो है, वो क्यों किया जाएगा। देखिए बीच में जब एकदम गेम चालू हुआ था, बाद टैक्टिक चेंज किया गया था, तो क्या उसमें कुछ गलती हो गया? क्या उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? वो सब कुछ हम लोगों को फॉर श्योर देखने के लिए मिलेगा। एज़ ऑफ नाउ बॉल छीना गया है। बेंगलुरु एफसी आज बिल्कुल भी को-ऑप के अंदर तो मौका नहीं देना चाह रहे हैं। सीजे, साग्निक दोनों अपने अंदर जो वो केमिस्ट्री है वो बनाते हुए दूसरा गोल एंड उसी के साथ बेंगलुरु एफसी अपने जो लीड है उसको दुगना करते हुए और उसी के साथ-साथ आधी सीमा उनके पास कोई क्लू ही नहीं है। You know, something's going down. Adi Zima is not happy with what something's wrong, definitely. It's his console. You could see things are starting to get heated up. We'll have the updates, but in such an high intense situation, it's bound to happen. You never see CJ getting into verbal spat, but this is it. This is when he knows that situation has come down to that. He's fighting, but regardless, I don't know. The referees will have to come in. We'll find a solution in just a while. It seems like FC Goa are uncomfortable, and still, there will be a resolution for that. But regardless, for what's been going on, it was a phenomenal start for Bengaluru FC. Especially, I think CJ TT. One thing for sure, he's taken matters into his own hands. You could see what हुँ। he's doing right now. He gets the ball. All he does is perform skill moves after skill moves. Be it a heel to heel, be it a step over, whatever needs to be done. And he's just playing around FC Goa's defense. And just like that, when we were saying that FC Goa is still the better co-op team, now it doesn't look like to be the case anymore. And things have gone down the wire. You could see, some exchanges being made over there, and that is the intensity that I'm talking about. I'm sure the atmosphere inside the studio is so humid, so intense that you cannot express in just mere words. Oh my God, what did we sign up for? मैं तो इधर सोच रहा हूँ लाइक मुझे भी मन कर रहा है कि मैं स्टूडियो के अंदर जाऊँ और सुनूँ लाइक क्या बातचीत चल रहा है बट देखिए वो तो हम लोगों को अपडेट आएगा बट एक चीज़ जो कि मुझे
लगा इस गेम के अंदर से एंड इस गेम के अंदर मेनली मुझे जो लगा कि इधर देखिए ये को-ऑप गेम है और इसके पहले क्या हो रहा था कि वी शर्मा अकेले सारे डिफेंस को इधर कहीं न कहीं होल्ड कर रहे थे एंड अकेले इधर पूरा मूव कर रहे थे। बट जब हम लोग को-ऑप पे आते हैं, तो को-ऑप पे क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो कोऑर्डिनेशन कहीं न कहीं जो है अभी मुझे लगता है कि वो कोऑर्डिनेशन को ब्रेक करने के लिए सीजे अपने स्किल मूव्स को यूज़ कर रहे हैं। वो इधर पास में नहीं खेलेंगे, वो डायरेक्ट जाएँगे बीच से निकलेंगे क्योंकि 2 डिफेंडर का 2 सेंटर बैक को एक साथ मूव करना उतने सिंक के साथ उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लाइक अगर आप सालों-सालों एक साथ खेलते हो, देन जाके हो सकता है। ब उसी का शायद फ़ायदा इधर उठाया जा रहा है सीजे की तरफ से। And I think, yeah, of course, I'm not going to take away that experience from him, but it kind of feels like V Sharma poked the bear, right? It feels like he's infuriated CJ. I've seen CJ for a long, long while, but I've never seen him this vulnerable, right? It's just a flurry of raw emotions. You could see on just spare some minimal pauses. I do not know what really happened. Could have been a crash or something. But regardless, I've got the update for you guys. We are going to resume from 16th minute with the scoreline still being 2-0. There's not going to be any restart. So whatever V Sharma was complaining of, we don't know what the case was. Maybe a minor lag or a delay. And trust me, at the highest level of FIFA, even a microsecond of a delay can be one of those icebreakers into you losing a game or winning, right? So considering what is happening over here, I hope they've got their PlayStations in order. Everything is a-okay because we're going to be resuming this match again, folks, from the 16th minute. So, as things stands, right now, Bengaluru FC have gotten themselves the driver's seat into this matchup. A 2-0 advantage, and especially in the first 16 minutes, you know that Bengaluru FC are going to score a lot of goals. But for FC Goa, it's such an uphill task, right? Not only they have to score an equalizer, that is score 2 goals, but also score the winner. But right now, how if you can just go with the storyline. Let's say Bengaluru FC win this co-op game, then we still have Adi Zima trying to play against Sagni. And if Adi Zima wins that, then we will have another co-op game where whoever is the winner of that particular match gets to be the grand finalist. But if Sagnik bests out Adi Zima, then it's done and dusted. Then and there, we will have our grand finalist, the first grand finalist of eISL Season 2. But that being said, folks, we have resumed the matchup, and this time FC Goa are looking a little aggressive with Ronaldinho looking for avenues to make a pass with Jude Bellingham. Pass on towards Ruud Hullet. Now just trying to draw the players of Bengaluru FC, but seems like they're uninterested. They do not want to overextend over there. They do not want to commit any minor error. As there you go, just like that, the ball has been stolen away. एंड काउंटर पे इधर बेंगलुरु एफसी बहुत अच्छा मौका बनता हुआ राइट हैंड साइड पे एम्बापे निकल चुके थे एक पास एंड काम तमाम हो सकता था हालांकि इस बार माल्डिनी के साथ आए एंड डिफेंस काफी अच्छा बट अभी तक खतरा टला नहीं है एक शॉर्ट कॉर्नर के साथ शुरू करेंगे और हम देखें सीजे आज के दिन पे अपने हाथ पे लेके इंडिविजुअल स्किल सेट के साथ इंडिविजुअल ड्रिबलिंग के साथ आगे लेके जा रहे हैं एंड स्कोर कर रहे हैं सो साग्निक शायद आज एक प्लेमेकर की तरह खेलेंगे शायद वो आज बॉल जस्ट पास करते रहेंगे जितना ज्यादा हो सके सीजे की तरफ एंड मोस्ट प्रोबेबली वो फिनिश करने की कोशिश करेंगे बट हाँ एक चीज कहना होगा कल के दिन पे सागनी की तरफ से भी कहने के बहुत ही अच्छे खासे कुछ जो फिनिशिंग है वो देखने के लिए मिला था बट अभी बॉल कंट्रोल प्रॉपरली बैंगलोर एफसी के पास एंड धीरे धीरे देखिए एक गैप तो बन रहा है यस विथ लियोनल मेसी एक रन कहने की देखने के लिए मिल सकता था वो गैप्स जो है वो बार बार ढूंढा जा रहा है इस बार हालांकि वो गैप को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए बट हाँ एक चीज कहना होगा कि अटैक अभी बन रहा है मेसी के साथ शॉट हो सकता है शॉट लिए बट बच गए तीसरा my हो सकता God. था ये गेम Oh, that one hiatus, I think, could have broken that momentum, but felt like that would be the case, but not with CJ anymore. Whoever was controlling Hakimi there,
Had he not made that sliding tackle, had he not got for that, but no time to ponder. As look at CJ. Elastico to reverse Elastico. He is doing it all. And FC Goa are having such a tough time defending against him. What's going on? I cannot really process. This is a CJ you do not want to see every day, or in fact, any day. गोवा लाइक उनको कोई मौका ज्यादा मिल नहीं रहा था बट फाइनली ये मौका ओ माय गॉड व्हाट अ डिफेंस सीजे की तरफ से वो स्लाइडिंग टैकल जो आया वो ऑन पॉइंट था क्रिस्पी था और उस जगह पे ऑन पॉइंट अगर नहीं होता तो पेनल्टी तो आता ही उसके साथ एक कार्ड भी वेटिंग में था लेकिन बेहतरीन 100% एक्यूरेसी के साथ उन्हें डिफेंस किया गया बट विथ रोनाल्डिनियो एक बेहतरीन कहने की आपको क्रिएटिविटी मिलता है क्रॉस किया गया है बट मार्टिनी बट अभी भी खतरा है चला विद एम्बापे तीसरा गोल और गाइस इधर ये 16 मिनट से ही चालू हुआ है स्कोर लाइन पे 1-0 दिख रहा होगा बट एग्रीगेट स्कोर लाइन के जस्ट नीचे उधर दिख रहा है प्रॉपर स्कोर जो कि 3-0 हो चुका है और इधर से तो मुझे लग नहीं रहा कि एसी गोवा कमबैक कर पाएंगे इस कोऑप मैच पे Yeah, it's 3-0 already into this co-op game, and I think this is where it could all go falling down for FC Goa, because from here onwards, only a miracle can save them. Adi Zima may have bought a little bit of a time with that pause, thought that he could just calm down the fire burning out of CJ, but that was not the case. But this time with Lionel Messi, FC Goa Wow. do find their way back in. Still a 3-1 scoreline going on now, folks. 2 more goals for FC Goa, and we're almost at the end of the first half. Into the second half, in the first 15 minutes, FC Goa need to score another and need to make sure that they do not concede anymore. But Bengaluru FC are in no mood to stop from scoring, and this was really needed. He had to push it with Capdevia, and there you go, the first half whistle blows. FC Goa with an enormous task ahead of them. Some could say it's impossible, but hey, FC Goa have been liking their odds, especially with what V Sharma pulled off in his individual match against CJ. But seems like the elephant in the room, CJ, he's not happy. He wants to inflict more hurt, instill his fear in the hearts of the players of FC Goa, crush Adizima mentally to a point where Sagnik could have a massive advantage against him in that individual game. यहाँ हो सकता है एक मैसिव एडवांटेज हो सकता है अगर स्कोर लाइन इसी तरीके से खत्म हुआ लेकिन एफसी गोवा जिस तरीके से लाइक जस्ट फर्स्ट हाफ के खत्म होते होते आखिरी कुछ मोमेंट पे एक गोल स्कोर किया आई थिंक वो अभी भी गेम के अंदर जिंदा है एंड वो शायद इधर से कमबैक भी कर सकते हैं क्योंकि 45 मिनट्स का एंटायर गेम अभी भी बाकी है और क्या क्या ये 45 मिनट्स इनफ रहेगा एफसी गोवा के लिए गोवा पे कमबैक करे बट उस जगह पे देखिए सिर्फ उनका टास्क ये नहीं है कि वो इधर कमबैक करे 2 गोल स्कोर करके। उनका टास्क ये भी है कि रोकना है बेंगलुरु एफसी को गोल स्कोर करने से। तो देखना होगा बट दूर से फिनिश इस बार ज़्यादा लाइक कुछ टेस्ट नहीं कर पाए बट हाँ, न्यू-न्यू तरीके यूज़ किया जा रहा है जिससे कहने के प्रेशर इधर एफसी गोवा के ऊपर तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। Yeah, and this is something that Bengaluru FC had also done yesterday, right? This is one of those routines we had seen. Mostly it was done with Ruud Gullit. We've seen CJ do that quite often, this time with Ronaldinho. So as things stands, the scoreline is 3-1 to this matchup favoring Bengaluru FC. FC Goa really need to find another goal in the next 10-15 minutes. Otherwise, Bengaluru FC just press over. And then it will all fall down on Adi Zima's strong shoulders. But right now, what Bengaluru FC want to do is just crush them mentally as a nice cutback comes in. But a vital interception there. And now FC Goa could launch a counter attack.
एफसी गोवा लाइक बाल-बाल बच रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बैंगलोर एफसी लाइक अटैक पे आ रहे हैं और वो आखिरी प्लेयर जो बच रहे हैं डिफेंस के लिए वो आके बॉल बचा रहे हैं। तो डिफेंस के मामले में एफसी गोवा आज थोड़ा-सा हल्का लग रहे हैं इस को-ऑप गेम के ऊपर। बट उसी जगह पे अटैक अभी एफसी गोवा की तरफ से जगह अभी तक नहीं मिल रहा था बट फाइनली एक मौका मिला है, लेकिन उसको अभी के लिए डिफ्लेक्ट तो किया जाएगा। हालाँकि रिस्की मूव था, बॉल दोनों के लिए ही अवेलेबल था, लेकिन छीनते हुए देखने के लिए बैंगलोर एफसी। We could see if the players of FC Goa getting a little impatient just when you thought that with R9 he might go for that extra shot, wanted to go directly, and that was not even green timed. So the pressure is starting to eat the players, and with every passing minute, FC Goa, their hopes are starting to diminish. And Bengaluru FC know that one more goal, and it could be game, set, and match. It could be done and dusted with R9. They're doing exactly that. A nice cutback Wow! with Kylian Mbappe. No room given. And Charanjot knows that he's got this match in the bag. And FC Goa will have to look for their contingency plan. Will have to look for the insurance policy. Does Hadisima has what it takes to push this series into a decider co-op? Because I don't see Bengaluru FC losing from here. बैंगलोर एफसी एक बार फिर से 3 गोल का लीड इधर बना लिया। सो इसके बाद हाँ, एकदम सही कहा आपने कि इधर से मुझे भी नहीं लग रहा कि एफसी गोवा का कोई भी कमबैक आएगा क्योंकि जो एक गोल आया था उसके बाद से और कुछ खास उनकी तरफ से दिखा नहीं है। लाइक फर्स्ट हाफ खत्म होते-होते 2 ही मिनट बचे हुए फिर सेकंड हाफ के अंदर भी ज़्यादा कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिला नहीं एंड स्पेशली जब एफसी गोवा इधर ट्रैक पे जा रहे हैं उसी टाइम पे बैंगलोर एफसी का जो डिफेंस है डायरेक्ट लो ब्लॉक पे जा रहे हैं 8-8 प्लेयर मिलके एक साथ डिफेंस कर रहे हैं। तो या उसका प्रॉपर फायदा एंड आउटकम देखने के लिए मिला है आज के इस दिन पे। 4-1 का स्कोर लाइन आखिरी बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट और ये 25 मिनट के बाद सारा का सारा प्रेशर चला जाएगा एफसी गोवा के ऊपर एंड साग्निक को वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा जिसको उनको यूज करना है। तो अभी भी कहीं न कहीं कह सकते हैं ये गेम अगर एफसी गोवा हार भी जाते हैं, फिर भी उनके पास चांस रहेगा कि वो इधर पूरे मैचअप को ड्रॉ करें एंड उसके बाद एक एक्स्ट्रा को-ऑप मैच के लिए जाए और एल्स इधर साग्निक अगर अपने एडवांटेज को काम पे लगा पाते हैं, तो वो उनके लिए बेहतर होगा। बट इस बार एक अच्छा मौका बन रहा था लेकिन उसका क्या रिजल्ट आएगा? नो बेहतरीन डिफेंस इधर बैंगलोर एफसी की तरफ से। Surely FC Goa would be missing their coach. They did say he's worked on their final third, but looks like could be another goal in the making for Bengaluru FC as they sing the lullabies. And FC Goa have been put to sleep into a long slumber from the moment they wake up. It is a match that has been lost. A 5-1 thrashing going on in this co-op game. Bengaluru FC seems like are just one more win away from making it to the grand finals with just merely 15 minutes remaining into this match. And I don't see FC Goa scoring 4 goals from here onwards. Need to pull a rabbit out of their magic hat if they have any. But what Bengaluru FC have produced tonight has been absolutely ludicrous. And FC Goa looks stunted with what to do. फाइनली इतने देर के बाद बॉल मिला था बट नहीं, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए दिखा बट हाँ बहुत ही ज़्यादा गलत पासेस एंड आई थिंक मुझे लगता है कि एफसी गोवा लाइक वो सिर्फ प्रेशर में नहीं वो अभी टूट चुके हैं लाइक वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इधर टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो दूर दूर से पास खिला रहे हैं जो कि यूजुअली लाइक कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर या फिर कोई भी आप गेम पे नहीं खेलना चाहते हो क्योंकि उस पे अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप हाँ सीधा देख के जा रहे हो आप थ्रू खिला रहे हो दैट्स ओके बट अगर आप टर्न करके पास देते हो इतने दूर देन वो ज्यादातर चांस यही रहता है कि इंटरसेप्ट हो जाए। तो वही होता हुआ दिखा था और इस बार एक बार फिर से कोशिश स्टार्ट हुआ जिम्बापे बट हकीमी
रेडी थे। और को-ऑप गेम के अंदर जहां हम लोग कह रहे थे और जहां हम लोग देख रहे थे इस पूरे एंटायर सीजन के अंदर कि एफसी गोवा हर एक क्लब को जस्ट डिमोलिश करते हुए जा रहे हैं, उसी जगह पे लैंड के ऊपर आके फाइनल डे पे बेंगलुरु एफसी इधर दिखाते हुए, तो हम इतने दिन शायद हार गए थे लेकिन पिछली बार, बट इस बार नहीं। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम परफॉर्म करके दिखाएँगे। And right from the get go, we could see, Bengaluru FC just forgot everything. They were infuriated. What they did was, CJ, a simple call, just give the ball to me, and I'll handle the final third. And you could see the first two goals just came in from the sheer brilliance of how well he's dribbled the ball through. And you could see that hunger, that intent to win, and still kept himself alive. And at this point, FC Goa clearly have not been playing in the natural element, right? FC Goa, they don't usually play in co-ops like this. They have never looked so vulnerable at the perils of Bengaluru FC. And this is it, right? The final game, it comes down to that. It comes down to Adizima. Does he have what it takes to best Sagnik? Because if he loses from here, then it is Bengaluru FC securing a berth in the grand finals. But Adizima has done it yesterday. He has managed to best Sagnik. But what an occasion would it be for Sagnik if he can manage to best Adizima. If he can beat here, he is going to be the other hero for Bengaluru FC. CJ has redeemed himself in the co-op. He's got this job done, but now it rests on Sagnik's nimble shoulders to try and pull this helm forward. Bengaluru FC just a game away from the grand finals. But still, the final hurdle in Sagnik's path is going to be Adizima, a player who's so accomplished in the real world, is the coach of Sagnik himself. Prodigy going up against his master. What does happen? I cannot express in mere words. एंड उसी के साथ कहने के हम लोग बढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी हमारे फाइनल गेम के ऊपर, जो कि होने वाला है सेमीफाइनल का आखिरी गेम, अगर इधर बेंगलुरु एफसी निकाल के लेके जाते हैं तो। बट हाँ, हाईलाइट पे इधर कहने के हाईलाइट दोनों क्लब्स का नहीं, इधर हाईलाइट ज्यादा है बेंगलुरु एफसी का। लाइक बेंगलुरु एफसी जिस तरीके से परफॉर्म किए, जो गोल्स उन्होंने दागे, उससे एक चीज तो पता चल रहा था कि यस, बहुत ज़्यादा क्लियर था उनका स्ट्रैटेजी। लाइक वो पहले से ही प्लान करके आए थे कि कुछ इसी तरीके से खेलेंगे। बट देखिए, ये प्लान तब जाके इम्प्लीमेंट हुआ जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस के थ्रू सीजे की तरफ से कुछ लाजवाब 2 गोल आए थे शुरुआत में। बट ये गोल भी बहुत शानदार था। लाइक सागनिक रिसीव किए, उसके बाद थोड़ा होल्ड किए, पास किए टू सीजे एंड सीजे फिनिश किया। बट वही बात है, सब कुछ अभी आके रुका है उस मोमेंट पे। एक गेम बाकी, एक गेम दूर ग्रैंड फाइनल से। क्या इधर सागनिक निकाल पाएंगे गेम को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट अगर बात करें फॉर एफसी गोवा एंड द गॉड्स, वेल, दे हैव टू win this next match and then we will have the decider. Another co-op right then and there, which will be the tiebreaker, the ultimate decider, whatever you call it. Because for that to happen, of course, Adizima needs to win this one, and then one more co-op, and then whoever wins gets that golden ticket into the grand finals. But for both these clubs, it's been mentally exhausting, to be honest. And how do they do that? That's a big question. But I'm pretty sure, the other two semi-finalists would be kind of a little bit worried, especially Northeast United FC, who have got such a huge advantage, right? They are literally on the driver's seat, just one win away from the grand finals. And Saransh, Chen and Emad know that Bengaluru FC is one of their opponents which they need to avoid. Because I still remember in the league stages that first match between CJ and Saransh. CJ did not let Saransh even take a single shot on goal. That is how dominant CJ was, and that too, it was an online matchup. In a LAN,
both these players, I can say, have played at the highest level of competitive FIFA. And surely Sharansh must be looking for his revenge matchup, but he would better like his odds against FC Goa. But again, that is another story because Kerala Blasters FC will also be on a path of redemption. They do not have any cushion. One match, if they even lose, beat anyone from the three that have to be played, then it's done and dusted for them. Yesterday, could really feel for Shubham, especially against Saransh when he was trying. He was almost 3 goals down, still had almost scored that equalizer, but that was not the case. But now we're back into this matchup. Adi Zima versus Shagnik. FC Goa versus Bengaluru FC. A settler. If Sagnik wins this one, he secures his spot in the grand finals for the first time in the eISL. FC Goa have been in this situation before. Vanshaj, he had lost his spot in the grand finals. He lost in the playoffs. But this time, he's done his job. It all rests on Adizima now. As the match has begun, FC Goa from left to right and Bengaluru FC from right to left. वो आखिरी मोमेंट आ चुका है, कहने की हो सकता है आखिरी, अगर इधर साग्निक अपना नेचुरल गेम खेले और उसी के साथ-साथ जीत के जाए। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आदी सीमा कल के दिन पे साग्निक को हराए थे और वो आउट ऑफ कंट्रोल गए। थोड़ा क्रॉस शायद उनकी तरफ से निकालने की कोशिश था, बट क्रॉस वो हो नहीं पाया। बैकलाइन के बाहर बॉल जाता हुआ दिखा है। बट आप एक बार सोचिए लाइक आदी सीमा के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर अभी आ रहा होगा क्योंकि उनके कंधे पे है। क्या उनका क्लब इधर सर्वाइव कर पाएँगे टू ग्रैंड फाइनल्स और इधर से ही वो हो जाएँगे एलिमिनेट। तो कहीं न कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बट ये जो क्वेश्चन आग्निक को मिला है वो कल भी उनको मिला था। बट आज उस क्वेश्चन का एडवांटेज लेना होगा जो कल वो नहीं ले पाए थे। I think TT, it's all about who handles the pressure well, and seems like the Gors are making a really good run. The only fallacy I could see was Adi Zima did not have enough men to go for another pass over there. But still, he's going to try and keep the ball in play. You could see the pressure where Shagnik is constantly fighting for the ball against him. And now Adi Zima trying to play around that center. He's got Rudhulit to beat. With his own Rudhulit, he goes for a back pass. With Eder Militao, we've seen a lot of Maldinis. I haven't seen a lot of Eder Militaos, but a few players have opted for him. With Ronaldinho, would be looking for a ball roll scoop into a cutback, but that was well read by Sagnik from miles afar. He's got Lionel Messi behind on defense, but interestingly so, let's see what can Sagnik produce from here. Sagnik yesterday in that matchup against Adizima had lost 1-2. So this match he's playing under different circumstances. The pressure could not be more than ever. So at this point, yes, Sagnik has to prove his mettle, has to prove to his fans that he's just not playing second fiddle to CJ. When the moment arises, he can step up to the occasion and also deliver. 17 मिनट का गेम ऑलरेडी हो चुका है और ये 17 मिनट के अंदर एक चीज़ तो पता चल रहा है कि आधी सीमा लाइक वो क्लियर है। ज़्यादा डिफेंसिव खेलेंगे तो नहीं होगा, तो वो अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं। वो जब-जब उनको मौका मिल रहा है थ्रू बॉल्स खेल रहे हैं, क्रॉस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड साग्निक की अगर बात किया जाए, साग्निक होल्ड कर रहे हैं। जब उनके पास बॉल है, वो चाह रहे हैं कि उनके ऊपर आए, आधी सीमा आके चार्ज करे एंड उसके बाद वो पास निकाले। और उस जगह पे कहीं न कहीं थोड़ा स्लो डाउन हो जा रहे हैं साग्निक। बट इससे अगर उनको फ़ायदा मिलता है दैट्स ओके, बट अगर नहीं मिलता है देन मुश्किलें कहीं न कहीं क्रिएट हो सकता है, बॉल छीना जा सकता है। अभी के लिए छीन भी चुके हैं, आधी सीमा काउंटर में भी जा चुके हैं, राइट हैंड साइड से रोनाल्डिनियो रन निकालते हुए एक पास काम No खत्म हो सकता है way! बट नो! वैन डे सार लाजवाब गोलकीपिंग। Zima had triggered Lionel Messi already for a run. All he could have done was a grounded pass, but seems like he had a play in his mind, and in trying to execute, well, it went out for a corner. Still Adizima keeping possession, but FC Goa, we haven't seen Adizima make those small mistakes, and I just hope it doesn't go down to haunt him. Is now still keeping the ball in play for the Gors. Has gone for an aerial attack this time, but Virgil van Dijk being ever so cautious. And now Shagnik
has gotten the ball back. ये जिस तरीके से सागनी इधर खेल रहे हैं, अभी के लिए एक थ्रू बॉल भी निकाला जाएगा। क्या ये एक गोल हो सकता है? पास नो, 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 बॉल बैक लाइन के बाहर गया। गोल किक मिलेगा इधर एफसी गोवा को, बट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सिमिलर गेम चल रहा है, लाइक सिर्फ रोल चेंज हो चुका है। जब सीजे के सामने कहीं न कहीं खेल रहे थे वी शर्मा, वो जिस तरीके से अप्रोच कर रहे थे, उस तरीके से सागनिक इधर अप्रोच करते हुए दिख रहा है आदिजिमा को। Yeah, I mean, this is the pressure speaking, because yesterday, if you remember, when FC Bengal, FC Goa were 2 games down, Adizima comes in, and in the first 10-15 minutes, he scores that one goal, and it's already been 30 minutes, and we're yet to see a golden chance being created by him. He's second guessing himself. He's not playing in his natural flair. So clearly, you could see that Adizima is struggling over here. But right now, again, applying that pressure on Sagnik, he's ought to score on one of those occasions. And Sagnik, he's not aggressing for the ball. He's not fighting instantly. That was hit hard, but it still goes out for a corner for FC Goa. And all right, that is something I've never seen. Kind of gave the ball away on a silver platter, and now our nine could be on a run. But the only problem is Sagnik does not have a lot of support. So has eventually resorted to a back pass, has now a little bit of a room on that right wing. Come on, Sagnik. Concentrate, focus. This is what both these players need to do right now. एंड स्पेशली इधर आदिजिमा, लाइक जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, उनको कहीं न कहीं पता चल रहा होगा कि यस वो प्रेशर कर रहे हैं सामने के ऊपर, लेकिन सिर्फ वो प्रेशर क्रिएट करके नहीं होगा, डिफेंस को इधर तोड़ना होगा जो अभी के नहीं कर पाए हैं। और सागनिक की तरफ से उनका डिफेंस बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया गया है। कि अभी क्या होगा, आखिरी कुछ मिनट बाकी है फर्स्ट हाफ के, 42 मिनट्स का गेम ऑलरेडी हो चुका है और आखिरी अटैक एफसी गोवा खुद ही करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई द बॉल कंट्रोल रखते हुए अपने पास विद एम्बापे, Wow! एम्बापे एंड ऐसा मिस करते हुए, आई थिंक इतने बेहतरीन गोलकीपिंग के बाद अगर आप ये शॉट मिस कर रहे हो, देन ये कहने के लाइक थोड़ा सा अजीब सा था। बट हाँ, वी अगर इधर बात किया जाए आदिशिमा की, तो आदिशिमा इधर जो चाह रहे थे वो प्रॉपरली ऑन पॉइंट जा रहा है और जो डर कहने के सागनिक दिख रहा है, जो डिफेंसिवनेस वो दिखा रहे हैं अपने गेम के अंदर, उसका कहने के जो फल है वो अभी उनको मिलता हुआ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि उनको अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। Yeah, I think this was much needed for FC Goa. And at this point, Adizima taking that risk, but Sagne could instantly give him a sucker punch as he equalizes at the brink of the first half. And Adizima cannot believe himself. Lets that laughter loose. And Sagnik, that steely demeanor. Both these players, they know how much this means to them. And there you have the first half whistle blows. What a match! What a game! Folks, we've got on our hands. And just when we thought that Adizima could capitalize from that first goal, ends up conceding one. And we are back to ground zero. The second half is going to be exhilarating. एक बार के लिए वो आखिरी मोमेंट पे आदिशिमा ने लाइक अब कहने के गोलकीपर को कंट्रोल किया था, राइट साइड पे लेके जाने की कोशिश था, उनको लगा था डायरेक्ट शॉट लिया जाएगा, बट सागनिक उस मोमेंटम टाइम के ऊपर उन्होंने देख लिया लाइक क्या कर रहे हैं इधर, और उसी वजह से एक राइट कट किए और उसके बाद फिनिश किए क्योंकि बहुत जगह खाली मिल गया था उनको। सो 1-1 बेंगलुरु एफसी कमबैक तो किए, लेकिन उनका नेचुरल गेम खेलना बहुत ज़रूरी है और सागनिक अभी भगवान को बुलाते हुए ये कुछ भी करो, सिर्फ फाइनल तक पहुँचा दो। At this point, to be honestly breaking down what's really happening, the first half, you could see, Adizima being predominant. He's been creating those chances, but he was somewhere, thinking too much. And then came a point where he goes for an unconventional style of play, right? What he did was in that first goal, you could see with Kylian Mbappe, you don't see a lot of players taking those shots with his left foot, right? They kind of tend to go for that extra pass, but that shot sort of lacked power, but the curve was there enough to beat Van der Sar. And just right after,
His defense was all over the place. Conceded one, gave an easy goal away to Sagnik, and that might be hurting him. But still, he's managed to retrieve the ball. A beautiful cross Oh, was there in the making, but before he could go for a stunning finish with that overhead shot, a bicycle kick, Sagnik manages to retrieve back the possession. सागनी देखिए लाइक बॉल कंट्रोल जो है वो अपने पास तो रख रहे हैं। देखिए कंसेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन हमको अटैक भी बनाना होगा। फाइनली अटैक बनाने के लिए पहुँच चुके हैं। बेहतरीन टिकी टाका, बेहतरीन पासिंग और जिस तरीके से वो पासिंग कर रहे हैं ऑन पॉइंट जाता हुआ, Wow! ओह माय गॉड! व्हाट अ गेम! क्या प्ले बना रहे हैं वो। बट नो फाइनली जाके विद मिनट का वो बॉल छीना जाएगा। काउंटर पे जाने की कोशिश, लेकिन सागनी जिस फ्लो पे अभी दिखे जस्ट सेकंड हाफ शुरू होते ही, उससे देख के लग रहा है कि इतने देर से जो कॉन्फिडेंस उनके तरफ से मिसिंग था या फिर जो डिफेंसिव प्ले वो दिखा रहे थे, वो अभी सब कुछ पीछे छोड़ चुके हैं। Wow! अभी गोल करने के लिए आएँगे। ओह! No way, no way, I don't know. Adi Zima is defending with all his might. Sagnik has been looking quite offensive in the second half, but seems like Adi Zima is reading him like an open book. He knows what Sagnik's up to, but this is a nice steal by Sagnik. Went in for that play lock, somehow has kept the ball. Still on Ronaldinho is looking for options to pass. Will eventually resort to the back, maybe. Still playing around, and you could see Adi Zima trying to fight for the ball. Has switched sides of play with Theo Hernandez. Can he beat through? Rather goes onto a pass onto R9 with that step over. Look for a ball roll scoop. Wanted to pass to Lionel Messi, but that was also well fended off by Adi Zima, who needs to, I think, sort of calm down at this situation. Just let this team get away first and then start initiating. He's still got some time, still got 25 minutes more to go. He's yet to make his substitutions. But after that 80th minute marker, if things stand at where we are right now, then I think we need to consider the prospects of an extra time. मे बी बहुत सारे चांसेस तो दिख रहे हैं शायद इधर एक एक्स्ट्रा टाइम की तरफ जाए, बट देखिए एक चीज जो सागनी की तरफ से काफी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है वो है कि उनका जो प्ले स्टाइल है वो सेम नहीं रख रहे। वो गेम के अंदर ही कभी कभार टिकी टाका फर्स्ट टाइम पास वन टू करते हुए जा रहे हैं। कभी कभार वो एक्स्ट्रा बॉल कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं एक सिंगल पर्टिकुलर प्ले के ऊपर, जिसकी वजह से इधर आदि सीमा को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि सागनिक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या वो बॉल ड्राइव करेंगे या फिर पास खेलेंगे, जिसका पूरा फायदा अभी तक तो मिल रहा था। लेकिन आदि सीमा जस्ट वो दूर है एक गोल से। एक गोल करेंगे, सारा का सारा मोमेंटम इधर पलट जाएगा और 66 मिनट का गेम ऑलरेडी हो चुका है। Whoa! वैंडे सार इधर आ चुके हैं। आज एकदम अलग इंटेंसिटी के साथ खेल रहे हैं सबके सब प्लेयर्स। Now look at Saknik. He is playing with fire. यस। I mean, that was a very bold move, but that was needed to be done. He's figured out that Adi Zimaev is going to go for those long balls, but with Kylian Mbappe and Ronaldinho, tries to burst past through the defense, still has a chance, can go for that cutback, but no! Van der Sar somehow managed to save it, and then it was intercepted away by the defenders. And now Adi Zima needs to initiate a counter attack. This game has been a game of two halves. First half, we saw FC Goa dominating, but suddenly in the second half, this could be the shot that is needed for Bengaluru FC, and Sagnik delivers. This lad has done it, it seems, at such a crucial moment. He's managed to score. वाओ! व्हाट अ गोल इट वाज एंड कहीं न कहीं सेकंड हाफ चालू होते ही कहीं न कहीं पता चल रहा था साग्निक वो धीरे-धीरे करके अपने मोमेंटम को वापस लेके आ रहे हैं। वो मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं और वो अपने ही धुन पे इधर डांस कराते हुए देखिए अभी तक सेकंड हाफ पूरा कंट्रोल में इधर देखने के लिए मिला साग्निक के। और वो कहीं न कहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे, बट ऑन द अदर हैंड आधी सीमा उनके ऊपर सारा का सारा प्रेशर, क्योंकि एफसी गोवा अगर ये गेम हार जाते हैं, तो उनके लिए ईआईएसएल सीज़न 2 जो कि अनबीटन स्ट्रीक के साथ शुरू हुआ था उनके लीग स्टेज पे, कल के दिन पे आके वी शर्मा अपना पहला गेम हारे, दूसरा को-ऑप पे निकला, तीसरे गेम पे आके आधी सीमा बचाए, बट आज एक पॉजिटिव
स्टार्ट के बाद भी कहीं न कहीं उनके हाथ से निकलता हुआ ये चांस सीज़न 2 ग्रैंड फिनाले पे क्वालीफाई करने का चांस, आखिरी कुछ मिनट साग्निक जस्ट वो अभी पहले गेम पे वापस जा सकते हैं, जब फर्स्ट हाफ पे वो कर रहे थे डिफेंसिव गेम होल्ड करके खेलना, वो अगर साग्निक अभी करेंगे ज़्यादा तो आई थिंक प्रेशर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो जो टाइमर जब आके जाता है ना टाइमर के ऊपर कि 90 मिनट्स के क्लोज आ चुके हैं, तब हर 1 सेकंड पे 2 गुना जो प्रेशर है वो बढ़ता रहता है। FC Goa, a club that was undefeated. You know, it was undisputed for them. Nobody even got close to them, close to beating them. And now suddenly they're on the precipice of being thrown off from the cliff by this young man, Sagnik. He's got to defend with all his lives. And seems like attack is the best form of defense for Sagnik as he looks to be scoring one more. But look at Adizima. He is throwing the entire kitchen sink out of the window right now. PAPL activated. Constant press activated. Look at how Adizima is fighting for the ball, and Sagnik cannot afford to give away the ball in such a crucial position. ओह! इस जगह से कहने की कोई भी तरफ गेम जा सकता है, बट फाइनली साग्निक इधर बॉल जीतते हुए हालैंड एज़ अ फ्रेश लेग लेके आया गया है। और देखिए कैप्टेविया भी आया है, तो दैट मीन्स इधर लेफ्ट साइड के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे आज साग्निक, लाइक इस मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर, बट आधी सीमा उनको लेफ्ट साइड पे खेलना जरूरी होगा। कल के दिन में भी एक सिमिलर सिनेरियो हुआ था, जिस जगह पे शायद Oh कोऑप था, no! जिसके ऊपर नहीं थे, इधर मौका था बट वो नहीं ले पाए शॉट, शॉट ऑन टारगेट नहीं लिए, कोशिश है कि एक्स्ट्रा पास की, बट उसी जगह पे साग्निक एकदम ऑन पॉइंट एक चार्ज करते हुए और बॉल छीन चुके हैं। Oh, this might go on to haunt Adizima. It couldn't have gotten better than this. He could not have gotten closer than this. Could have equalized, could have forced an extra time, and will be kicking himself in the foot if Sagnik goes on to score this one with Erling Haaland. Look at that physicality. But the final attack, I don't think at this point Sagnik would want to give the ball away. Dear Sagnik, hog to the dear ball for the rest of your life. It's 3 minutes now, made it into 2 that you have to defend, but no. Seems like Adizima gets that final attack. For the last time, Sagnik has to defend, gets to be called the hero for Bengaluru FC. And now just that one extra added time. Adizima, he had to throw everything at it, and seems like Sagnik has done it. Adizima graciously accepting defeat as Bengaluru FC, ladies and gentlemen, are your first grand finalists in what was one of the most exhilarating semi-finals. It boiled down to the last game, and when it mattered, this young prodigy has done it. This is where Sagnik excels in LAN. He's handled the pressure, and today he repeats it. And FC Goa, a team, a club that was undefeated in the league stages, are now out of eISL Season 2. आई थिंक इधर कहीं न कहीं लाइक किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से एंड होगा एफसी गोवा का सफर, क्योंकि एफसी गोवा को हम लोग वन ऑफ द फाइनलिस्ट कहीं न कहीं समझ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके का उनका सीजन था, वो लग रहा था कि उनके सामने शायद कोई भी नहीं टिक पाएगा, एंड वो हुआ भी। लीग स्टेज के अंदर कोई भी नहीं टिक पाया, बट लैन पे आते ही सारा का सारा माहौल बदल गया। कल वो शुरुआती गेम कहने के वी शर्मा को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और उनके कोप पे जाके एक बार फिर से लाइक जीतते हुए दिखे थे बेंगलुरु। कल 2-0 के लीड के बाद आदिशिमा हालाँकि फिर से वापसी कराए थे एफसी गोवा को, 2-1 कराए। आज के दिन पे वी शर्मा पेनल्टीज़ में लेके जाके जीते, 2 ऑल भी हुआ, बट गो अप एंड देन सगनिक, ये दोनों मिलके जिस तरीके से परफॉर्म किया, वो लाजवाब था। एंड ये बेंगलुरु एफसी ग्रैंड फाइनल पे जा रहे हैं, पूरे लीग स्टेज के टॉप पे बैठे हुए क्लब को हरा के।
तो इनका कॉन्फिडेंस जिस लेवल पे होगा, आई थिंक वो चाहे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हो या फिर केरला ब्लास्टर एफसी, कोई भी डरने वाले हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड तो ये चलेगा, यही है वो बेंगलुरु एफसी जो कुछ भी कर सकते हैं। Yeah, I mean, at this point, FC Goa must be feeling so gutted, especially Adi Zima, because in that first half, TT, he had created numerous chances. I'm pretty sure a lot of the players from the community would sort of exceed with the fact that the first half, Adi Zima could have scored a lot of goals, but I think it was just the pressure that started eating him up, because he is always calm as cucumber. But tonight, well, it was just too much for him to handle. But Sagnik, twice he had faced Adizima and had failed. But this time, when the stakes were higher than ever, he was the one who prevailed supreme and has managed to get a W for Bengaluru FC, and off they go into the grand finals. And I'm pretty sure the atmosphere is quite electrifying in the studio. Let's just directly head over to Suyash and ask him what's up. Okay, I'm with the jubilant duo of Sagnik and CJ who have just booked their spot in the final of eISL Season 2. Guys, that was a little nervous, wasn't it? Yeah, for sure. Like, I shouldn't have lost the first game at all, but that's FIFA, you know. On pens, it can go either ways. But I should have finished the game before pens. But we trusted our co-op. We won the co-op easily, and then Sagnik clutched up as always. He's always the clutch guy for us. Always a clutch guy is what CJ is saying. Sagnik, when you saw CJ going down in that first game, what was going on through your mind? Pressure tha thoda? No, not really, because I saw CJ playing really well. I mean, he dominated once, honestly, and then I knew that he's coming into the co-op game with vengeance. So we won as soon as we won the co-op, we knew that even if I didn't win the seventh game, would have been a co-op, and then co-op is our forte. So we are very confident from the very start. Right. I'll keep it short, guys. You know who's playing in the second semi-final. Who do you guys want to face? And be honest about this. I don't think we care at all right now. Like, if we play like this, we can beat anyone on our day. All right. Sagnik, what about you? I mean, I do want Northeast. I mean, I want to beat all the best pros and then become the winners. So yeah, it has to be Northeast for me. I didn't expect anything less from you, but honesty from Sagnik, of course. I know, you don't want to get too ahead of yourself, but congratulations on booking your spot in the final. Guys, we have our first finalists of the second season of the eISL. Do tune in on all the action on the eISL Gaming YouTube, Indian Super League YouTube channels, and the respective channels of the clubs. Guys, fixes TT, take it away. All right. A message loud and clear. They don't care who they're facing in the grand finals. They're here to lift that trophy, which was just behind them, and the 2 medals, and secure their slot in the FGS play-in tournament. And what a game it was. I must say, this was a thriller, but we've got so many more, because right now what we have is the second leg of semi-final number 2, where Northeast United have a humongous advantage. 3-0 already in that first leg. All they need is that one W and they are through to the grand finals. But for Kerala Blasters FC, it is an impossible task. But TT, I think they like the odds. They have done the impossible in the past, and today also I think they would want to do something like this. But yes, it's going to be tougher than ever. What do you think is going to happen? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस गेम को लेकर लाइक केरला ब्लास्टर एफसी के साथ, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स एफसी जिस तरीके से वो खेले हैं इतने दिन से, हाँ हो सकता है कि वो इधर ना क्वालिफाई करे, बट आई थिंक एक करारा टक्कर कहने के देखने के लिए मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को इतना इजीली वो जाने देने वाले हैं नहीं, और कल के दिन पे अगर देखा जाए, लोकमेनू की तरफ से काफी शानदार अप्रोच था, और उन्होंने जिस तरीके से अपना गेम चेंज किया वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आप ऐसे प्लेयर को देखते हो जो आप पूरे सीजन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि एक टाइम पे कहने के हम लोग कह सकते हैं लाइक डोमिनेट करके आए थे, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चल रहे थे, फाइनली वो कमबैक करते हैं, कुछ अलग लेके आते हैं। मुझे लगता है कि केरला ब्लास्टर्स एफसी शायद कुछ ना कुछ जो मैजिकल है वो शायद दिखा के जा सकते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है ऑपोजिट पे, इजी तो बिल्कुल नहीं होगा। बट हाँ, हमारा पहला फाइनलिस्ट इधर मिल चुका है, बेंगलुरु एफसी पहुंच चुके हैं फाइनल्स पे। सो गाइस, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि फाइनल पे 2 जायंट्स भिड़ने वाले हैं। अभी देखना होगा वो दूसरा जायंट कौन होने वाला है।
And considering, how the last matchup really went through, right? The last time Northeast United FC and Bengaluru FC fought off against each other, it was sparks flying throughout the stadium. And that is also going to be a case only if Northeast United FC make it to the grand finals. But to find that out, we will have to take a shuttle break, because coming right after is the second semi-final, second leg up for you guys.